actual from morning when nobody was aware the incident. I just got the information about 9 o'clock. Then I started my helping the people, and all the monitoring I did through my chief secretary, my home secretary, my district magistrate, and the police ADG law and order, and with the help of health department, we just sent medical van to disaster team, to our doctors, to medical personalities, to helping hands, to help the family and to restore the normalcy. And especially, you know, the operation rescue operation was over within few hours. And after getting the information in total, then I tried to come, but there was no communication. There was no flight. So just 4:30 there is a flight, and then I first came here to see all the patients, and patients also, there are some patients from Bardhaman, from Krishnanagar, from local also. So I talked to all of them. So I am sorry, एक्सीडेंट होता है, लेकिन बात ये है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। कभी कभी किसको मालूम ही नहीं होता कैसे घर जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन छोड़ के गाड़ी छूट जाता है, गाड़ी बंद कर देता है, बहुत सारे दिक्कत होता है। रेलवे डिपार्टमेंट का बजट उठा दिया। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था अभी नहीं है। रेलवे एम्प्लॉइज को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाता है। आई एम सॉरी, आई एम totally in favor of the railway employees and the government employees. Even their pension is also been withdrawn, earlier pension. They are fighting their battle. I am with them because I worked as a railway worker twice. So I know all the A to Z, everything about the railway. Nothing has been done so far. Newly, whatever the new metros and railway station are coming, it is because of my time. Just see the 2020 vision. I gave money for everything. Nothing is new. I started so many things, but I'm sorry, only they are showing वंदे भारत का नाम पे इतना पब्लिसिटी हुआ है, लेकिन where is दुरंतो? Because after राजधानी, दुरंतो was the latest, सबसे ज्यादा स्पीड में चल रहा था। लेकिन अभी चुनाव का टाइम में बता गया 4 वंदे भारत इसमें नहीं चलता। अभी तो पैसेंजर को इम्यूनिटी भी बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ है। टोटल रेल डिपार्टमेंट इज फेसिंग द नेग्लिजेंस, टोटल इज फेसिंग द नेग्लिजेंस एंड carelessness of the government. That's why I feel that they must protect proper care. I am not going because today is the Bakrid, and that's why in morning when the incident happened, I rang up Hamidul Rahman. He is a local MLA and he is a very powerful man, and I talked to him and I told him that Hamidul please, आज तुम्हारा बकरीद है, लेकिन तब भी तुम उस स्पॉट में जाओ, जो भी करना है करो। अब जब इंसिडेंट हुआ था साथ में स्टेट गवर्नमेंट का ओर से हम लोगों ने, चाहे मेडिकल टीम हो, चाहे मेडिकल डिजास्टर टीम हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे उसको सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए जितना भी कामयाबी होना चाहिए। आज ईद मुबारक ऐसे ही बकरीद है, उसका साथ फिर इंसिडेंट हुआ। एक साथ में सब मिलजुल के हम लोगों ने काम करके 2-3 घंटा में पूरा रेस्टोर सिचुएशन कर दिया। That is the problem. Why the manual?
Now there is no system for manualism. Now everything is technical, modern. It is a highly technical. Even in my time, there are so many, more than few lakhs, few thousands, I think, more than 2 lakhs. This is unmanned level crossing, and I gave manned level crossing to so many thousands, and we gave a period that within this time it will be completed. I do not know what is the situation. Now nobody is about any incident. Earlier there was no such system. Now every system is there, but nobody is there to taking care. 8 জন মারা গেছে as per my information from the administrations and the doctors. I must congratulate their junior doctors also. They gave even their blood for the patients to save the life of patients, and also injured now admitted in Phashida few, but they are not that serious. So here 1,000 admitted. Here it may be more than 20%. Most maximum patients are released. Now maybe 21. Some children are also 37. So what? It is his duty. It is not my duty. They are from Delhi. They have so many flights. But in Calcutta there is, I am giving free fuel with tax free. And all the North Bengal bound flight have been withdrawn. Why? Why government of India is withdrawing all the flights from North Bengal? People cannot come even. I am trying from morning to catch a flight. No flight was available. हमको जाने का जरूरत नहीं है. Already normalcy is there and restoration work is over. What we require that normalcy, that is already over. And हमने और एक काम किया, जो इधर में भर्ती भी है और लोकली जिसको पहचानता है उसको साथ कम्युनिकेट कर दिया. जैसे वो लोग जब घर जाएंगे उसको हम लोग घर में पहुंच सकते हैं. और दूसरी बात है, एक आदमी तो कल मेडिकल एम्बुलेंस में जाएंगे, वो हम लोकल एमएलए को बात करके इंतजाम कर दिया, बात भी करा दिया. आंध्र प्रदेश, Bhubaneswar, you see the latest, because I went there. I do not know whether hundreds of dead body is been identified so far or not. It is your duty to find out.